Okay. Yes, sir. So, good evening, friends. Today, we will have a very important class, and we will cover three very important areas today, which are clearly interlinked. One is the economic survey, which was presented before the Parliament yesterday. Then we will look at the falling value of rupee. Rupee has almost become now 91.8. Yesterday it was 92. We will look at the falling value of rupee. Then we'll go into a historic agreement, which is being called as the mother of all deals, which has been concluded with European Union. Okay. So these three issues are clearly interlinked. So that's what I thought, that let me cover them at some length. And then if time permits, we'll also go into the instruction which was issued by the collector Koraput, Mr. Mahajan, to ban trading of non-veg items on 26th January, and subsequently he withdrew that order. He withdrew that order on 25th, because when he issued this order, I got a message from the Chief Secretary whether this is constitutional or not. So I clarified to her that it is not constitutional; it's an unconstitutional thing. So then anyway, so we'll try to look into that. So that's the. But most importantly, we will go into the economic survey. A few days back, I had taken a class where I had also given some trends of Indian economy. But our economic survey is nothing but the economic health card of the country. Our desora health card. বিভিন্ন ministry from different ministries, finance ministry receives a report, and based on that they make an independent assessment. So it's a very, very important document. When I joined the Indian Economic Service in 1976, the first job that I had was being part of economic survey. 1977, when 49 years back, I was associated with formulation of the economic survey. So let's go into the economic survey. Okay. So what I have done, friends, take a note karo, note karo. Lot of material is coming in the newspapers. You'll also get in the magazines. So it's best, Deepak, to sum it up. What is that the economic survey is trying to convey? Firstly, it is saying that the global environment is uncertain, there is trade distortion, and there is geopolitical tension. So basically, the economic survey is saying that by all accounts, the world is turbulent and it is going to be turbulent. Are you all getting me? Amar jo prevailing economic environment achi, we will have to operate in an environment which is very uncertain. But the good thing is that India is doing very well. This is the first message he is trying to say. So the message that he is trying to say is, first thing, which is a real GDP growth. Please note down, real GDP growth was estimated to be around 6.5%. 2025-26 rate, the assessment earlier in our was 6.5%. So that has been revised to 7.4%. Good things are mon rakhibo. Whatever data is there in economic survey is the most authentic data. Tome jaha net re dekhucho jaha kocho, tome first dekhiyo eta source ta kor. So please remember, even in your prelims or in your main examination, whatever data is coming,
सेइथरे तमे कहबो नाइ सर मु तो पढितिली 6.9 थिला आरबीआई कहतला 7.1 प्लीज डू नॉट गो बाय एनी अदर डेटा except economic survey. It is considered to be the most authentic government information. बुझी पड़छो तो? So the real GDP growth would be 7.4%. Next होची next year it would be between 6.8 to 7.2%. This is again more than what was estimated, which was around 6.4. So the point which the economic survey, the chief economic advisor is trying to convey, that not only this year we are going to do better than what was expected, even next year we will do very well, very well. Now please remember, our entire national income is called Y. Y is what? Please note down. Y is equal to private final consumption expenditure. C lekhe. Please remember, when questions will come, questions will not come as C. It will come as PFCE. Private final consumption expenditure. बुझी पड़छ तो? मु सबले आगुर कहतली C plus I plus G. कौन कहतली C plus I plus G. Please remember, as far as your economics paper is concerned, please remember them as C plus I plus G. So please read C as PFCE. Is it clear? G is equal to nothing but government final consumption expenditure. Whatever government is spending on paid allowances and pensions. Are you all getting me? Paramilitary forces, subsidy, all these things is your G. And instead of I, this is what Keynes has said, that Y is equal to C plus I plus G. बुझी पड़छो तो? आमे मैक्रो इकोनॉमिक्स तरह कहे जे C plus I plus G को है. किंतु when we are looking at a document like economic survey, or what I mean economic terms, when we try to explain national income, please remember it is PFC plus GFC plus GFCF, gross final capital formation. Please note down, gross final capital formation. ता माने हला ए जो I रू, what are the assets which have come up? It is not looking at investment. It is looking at assets created. Asset बुझी पड़छो तो? आमे जेते बडे गोटे देशर बजेट विषय कहबा सेते माने इन्वेस्टमेंट कथा कहूने, आमे कहूचे से इन्वेस्टमेंट हेला कोन? It is not interested in your investment for gold. कि किए जमी किनुची, किए गोल्ड किनुची. Economy is not interested in that. What economy is interested? Please note down what economy is interested. What is the total saving? How it leads to investment, and then how it leads to GFCF. Please note down, this is the flow chart. What is the finance minister looking at? जे देशरे केते सेविंग हबो, से सेविंग रू केते इन्वेस्ट हबो, आउ से इन्वेस्टमेंट रू केते कैपिटल फॉर्मेशन हबो. आर यू ऑल गेटिंग मी? ना बुझियो नहीं? अरे गोटे हमर देशरे जो खर्च होची, इन्वेस्टमेंट होची, व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? ए जो खर्च रे कोन एसेट होचे हम जानियो चाहूचे ना. ये कौन asset है? It can be a building, it can be land, it can be equipment. Please note down, it can be जितना में GFCF कथा कहूचे, we are talking of assets like what? Land, building, plant and equipment. कौन हला? Land, building, plant and equipment. Okay, so
अरे बुझी पाले बर्तमान हैव यू नाउ अंडरस्टूड सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाई बजट कोचे बजट रे कोचे जे केते आमे प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन कले केते गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन कला आ सेतरे केते एसेट हला आर यू ऑल गेटिंग मी सो सेही तरह प्लीज नोट डाउन PFCE is around 61%. We are a $4 trillion economy. Roughly, our total GDP is how much? $4 trillion, $4.1 trillion. Is it clear? Buji porcho clearly. Our jo $4 trillion economy re 61% of kouthu consumption ru aସୁଛି ଆଉ 10% ଆସୁଛି गवर्नमेंट कंजम्पशन रू ଆଉ 29% आସୁଛି capital formation. Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? So now the economic survey is saying ये जो real GDP growth रा अच्छी please note down गोटा ये जो GDP कथा में कहूचे ठीक है नोट करे टाको कारण एटा होचे बड़ा this document is a very interesting technical document माने ए पर्यंत जेते सब हेइतला इकोनॉमिक सर्वे आमे तले बजट कथा कहूचे please note down that there is a supply side to it. गोटे country रा national income there is a supply side to it. Supply side रे कौन कौन आसला agriculture आसला sectors आसला कौन कौन आसला agriculture industry please note down agriculture industry and services. Are you all following me? ये जो हमारा $4 ट्रिलियन है ये $4 ट्रिलियन किमती है these three sectors are contributing to that. को sector contribute करची agriculture industry और services. Demand hala your PFC and your government financial consumption and these three ये जो तीनटा कथा कहली this is the demand side. Demand side को हला माने जोटा प्रोडक्शन हला सीधा वो खायो पड़ियो किए अरे बुझी पड़छ रे नहीं whatever is produced on the supply side from your agricultural sector from your industry from your services will be consumed by people like you so that becomes PFC. चावल खाइलो गहम खाइलो गहम रोटी खाइलो एवडा सब हला PFC तापरला गवर्नमेंट खाइला गवर्नमेंट कंज्यूम कला तापरे कैपिटल फॉर्मेशन रे आबर हला. सो प्लीज रिमेंबर व्हेन वी आर लुकिंग एट बजट वी आर जे जो ग्रोथ ता हेची जे ग्रोथ ता कोठ आछी. सो फ्रॉम दिस सप्लाई साइड प्लीज नोट डाउन फ्रॉम दिस सप्लाई साइड द ग्रोथ is coming from the supply side, the growth is coming from the service sector. Please note down. Amar jo tinita sector achi. Ko sector achi supply ta ko sector achi maximum? Which is contributing how much Deepak? About 51%. So whenever you are looking at the budget, you have to understand जे सप्लाई साइड रे बुझी पछो सप्लाई साइड रे मेन कंट्रीब्यूटर हला किए सर्विसेज whereas agriculture and industry have remained stagnant. Please note down agriculture आउ इंडस्ट्री टा stagnant अछि किंतु सप्लाई साइड रे सबटु तेज अछि किए सर्विस सेक्टर कोटा कहलो Please, we are looking at the economic survey. Economic services hochi 57%. For the economic survey, they have taken some external sector ta degree 9% करचंती बुझलो तो
So for the so services share is, and the growth is the highest. Please note down 7.2%. So supply side re ko sector hala services, and the growth is also the highest. On the demand side, please note down, on the demand side, the private financial consumption is the maximum with growth of 7.2%. अरे बुझी पड़छो कि नहीं? तमरो सप्लाई साइड रे डिमांड साइड रे कोन हैला पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीएफसीएफ, that is equal to agriculture plus industry कर दिया संगे एटा तमरो डिमांड साइड रहला कि नहीं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज बुझी पड़छो? ये रहला तमरो सप्लाई साइड और एटा हला क्लियर हे गला? सो इकोनॉमिक सर्वे कहूची एई जो हमरो एई जो इक्वेशन ता रहला डिमांड और सप्लाई रहला, एई जो डिमांड साइड रे केवल एईटा भलो करची, कोटा भलो करची? पीएफसी भलो करची, जीएफसी ता किछि इंप्रूव करूनी कि जीएफसी ता इंप्रूव करूनी. Are you all getting me? From the demand side, the component that is doing well is PFC with a growth of how much? 7%. And on the supply side, the sector which is doing well is services, again with a growth of 7%. So आमे जतले कहूचे जे हमरो real GDP growth ता, when we say that our real GDP growth is 7.2%, it is not as if that every component is doing well. Have you understood now this point? Amoro supply side रे जो components अछि, supply side रे कौन component रहला? Agricultural sector, industry sector, service sector. Demand side रहला private consumption, government consumption, और capital formation. So when we are saying that our growth is 7.2%, it is not as if that every component is doing well. So what is doing well on the supply side? Services. What is doing well in the demand side? Yes. So therefore, what are the concerns? Please note. So therefore, the budget has said that the basic concern, please note down, the basic concern is stagnant manufacturing, GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. X minus M is your external sector. So the budget is saying that the real concern, please note down, the real concern is manufacturing, but within industry, manufacturing and export. Our export ta bhalo houni, and our rupee is weak. Keep the answer kariyo. You must understand how to approach the question. Problem. So therefore, what is the suggestion of the economic survey? Please note down. Reduce manufacturing cost. आमे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केमती कम करिवा काहे कि ना आमे देखुचे जे आमे टेक्सटाइल रे, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल टू यू, टेक्सटाइल रे बांग्लादेश एंड चाइना आर टुडे कंट्रीब्यूटिंग 50% of the export. Textile रे Bangladesh is contributing 20%, Bangladesh, whereas India's contribution in textile is only 6%. Please note down. आमे एते बड़ देश हिकरी टेक्सटाइल रे, so therefore one of the reason होची हमरो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो दरकार.
apart from quality, are you all getting me? Then we have to improve export competitiveness. Ame khali koche tariff koche. Are you getting my point? So we are all the time talking of tariff. What this particular survey is saying, that please concentrate on improving your export competitiveness and how foreign direct investments should come to your country. Sir, कौन problem है? Can you just sum it up? When we are talking of the budget in the economic survey, it has said on the demand side we are doing well on private final consumption, whereas we are not doing well on the supply side on both manufacturing and agriculture. It has not mentioned about agriculture, but basically why it is mentioning about agriculture, about manufacturing, because manufacturing will create jobs. Agriculture will not create jobs. There are already enough people in agriculture, surplus people in the agriculture. Then it says that the major problem hochi amara stagnant manufacturing, amara rupee is weak, and we need to improve export. And how do we do that? We have to reduce our manufacturing cost. We have to improve our export competitiveness, and we should try to encourage that people invest in our country. So, how do you make, please note down, how do you make India a preferred investment destination? How do you make India a preferred investment destination? आमे गोटे कहूचे ease of doing business कहूचे. बर्तमान होची जे faster business. How to have faster business, not ease of doing business. We are now moving away from ease of doing business, how to do fast business. So if you have to do that, you have to be a preferred destination. Jahan pakre tonka achi, it has a choice to go to Vietnam, it has a choice to go to China, it has a choice to go to Venezuela, it has a choice to go to India. Are you getting my point? So are you a place? So then second, please note down, integrate with global value chains. Integrate with global value chains. Integrate with global value chains. अब एटा को बुझिवा सबु खाली नोट कर रखो global value chains, and how do you have an export oriented policy? How do we have an export oriented policy? एटा काहे कि मो कहूची जे so therefore the thrust of this particular budget, economic survey is how to improve our manufacturing footprint and how to make export competitive. Is it clear to all of you? Amara export ta kemiti competitive hava, how we become a country where people, so therefore if we want to see how this is to be done, then we'll have to see what is happening within India. Are you all getting me? This is the this is the summary of the economic survey, but we have to see data to see where India is doing well and where India is not doing well. Is that clear to all of you? So now let us go into the World Economic Outlook. Now, World Economic Outlook kohuchi je India growth of 6.2%, but actually they are saying now about 7.4%. So we are not, so while others are having outputs like this, so India would be like this. We now come to the, you see here, just see here. Now let us see, PFC dekha, PFC 61.4 thala. Please note down that in 2015
we were 56.6. आमे तो कहूचे जे हमरो consumption ता better हेची बोली. So they will ask you, on what basis are you saying this? Please note down that in 2015 amaro kete thila 56%. Okay. And what was gross capital formation kete thila 38 thila. Please note down. In 2008 it was 38. Buji parcho to? Whenever we are saying we are doing not well, then we have to say when we are doing well and what was the best performance. Amaro jo gross capital formation kete thila ko aguru 38. Is that clear? So now let us see the macroeconomic trends. अच्छा ए macroeconomic trends रे please note down. प्रथम हैला जे amaro real GDP is like this. Now inflation is coming down. Please note down. Inflation is under control. The economic survey is, that is why we are calling India a gridlocks economy. What is a gridlocks economy? Joti GDP growth is high and inflation is low. What is a gridlocks economy? An economy where the growth is high and inflation is low. Okay. So it is 7.4 and 2.1. Now just see the growth trends. This is a very, very important table. Now agriculture, we have done better. Please note down. In 2025-26, Deepak, we have done well. Now let us come to industry. Industry, how much have we done? 5.9. Please note down, but where we have not done well is manufacture. Please note down, manufacture, the growth is how much? How much is the growth in manufacture? 2.7. 7 rate. 2.7 industry industry. Acha, the sectors which is doing well is construction. Please note down. Construction is doing well. 9.4. Industry is what? Is a composition of what? Please note down. Manufacturing plus mining plus construction. Industry hela 24%. Please note down. Industry hela 24%. Sethre tinta component hela. Kon component rahila? Manufacture, construction and mining. We are doing very well in construction. And construction is one of the biggest sources of employment in the country today. Services, we are doing well. These are the macroeconomic trends. Manufacturing. Can you see all that? We are not doing well in manufacturing. Now we come to the. Just take this table, very interesting table, very, very interesting table. Manufacturing, this table will explain why we are not doing well. China, year compare. How much was the share in the world manufacture China? So this is the world's biggest manufacturing hub. 7.5 ru 31 age. What about USA? USA thala 22.5. Please note down this. It has come down to 15%. Trump tariff bosouchi. What is the reason? He wants again to go back to 22. Taman so bhavu se pagala da boli. Se kichi pagala ruwa. Se bahut budhiya loko. Are you following me? ए जो चाइना रो 7.5 रो 31 हला किम देला से समस्त कर काम नहीं गला ना. अरे जापान को देखो. प्लीज सी जापान 17.5 रो 6. जर्मनी 7.5 रो 5. ओडिसे भारत कथा कहया दरकार नहीं. माने जोड़ा सब अरे बुझी पड़तो ना नहीं. जापान थिला मैन्युफैक्चरिंग हाउ तार 11% नहीं है की नहीं छी. यूएस र 7% की नहीं छी. बुझी पड़तो कथा तो
आर यू ऑल नाउ गेटिंग इट? कहीं ट्रम्प कहूँ आपको बहुत पाजी टारिफ बसैया दरकार सी कहूँ आम बहुत भूल करचे 73 रे जो किणुचे खाली तेणु आमर सो बेसिकली he is also talking in terms of improving the manufacturing base in China. Are you all getting me? He is trying to get back to that 22%. आमर इंडिया मेरा भारत महान आमे खाली बबन मारी आमे उस्ताद आमे 2% रु 2.5%. एमिति कथा कहबा जिंदे 25% नहीं नहीं सर अपन पॉइंट डिसमटा भूल करते 25%. आ फिगरटा कंडुला करते अरे बुझी पड़छ तो कथा अरे कथाटा बुझो कि नहीं आमे टिके देखिबा काहे एमिति कथा न जे दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. Now please let us now, this is a very important slide, all of you please concentrate. जी आमे काहे की मैन्युफैक्चरिंग हमर इतनी दुर्दशा है छी काहे की होउची कोन आमे सबु निकम्मा हेचु सार को भले आईआईटी रु पास करिगिरी एमटेक करिगिरी सत्यबरे काम करचंती आमे कोन एमते निकम्मा हेचु ना. सो प्लीज नोट डाउन कि आमर प्रथमे जेतेबेले whenever you give an answer what are the issues with the manufacturing sector, please give answer. प्रथमे तमे देखिबो कि what is the policy. Supposing the question comes, what are the reasons for India's manufacturing sector not doing well? So sir करन दो तो तमे प्रथमे you have to state the policy. So please note down the first policy. The first concrete policy for improving manufacturing footprint was taken in 2011. Please note down. That is called the National Manufacturing Zone Policy in 2011. 2011 मसीह रे गोटे कमिटी हेतला वी कृष्णमूर्ति जो मारुति बचे नै सेतर चेयरमैन थिले सेल रे भी चेयरमैन थिले बहुत आउटस्टैंडिंग लोक. I was part of this committee from 2009 to 2011. I was part of this committee. तांको भला बुद्धिया लोग मु देखिनी इत्ती बुद्धिया लोग कहबा से जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें बाहर करथिलु प्लीज नोट डाउन हमर सेथरे मेन ऑब्जेक्टिव थिला जे हमें सब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन भारतर डिफरेंट जगह रे करबा कोन बुझि पड़छ ना खाली नाही जे तमिलनाडु रे ऑटोमोबाइल्स हबो कि महाराष्ट्र रे मैन्युफैक्चरिंग हबो. सो हमर थिला इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लीज नोट डाउन from 16% to 25%. 16% सेतले मैन्युफैक्चरिंग रे शेयर थिला ताको हमें कहउतले 25% करिया पे कारण हमें देखिलु कि जो देश माने खूब भलो करचंती सेमानकर मैन्युफैक्चरिंग शेयर इज मोर देन 30%. प्लीज नोट डाउन ऑल कंट्री जर्मनी चाइना जापान प्लीज नोट डाउन पांचटा देश रे share of manufacturing to GDP is more than 30%. की हेले चाइना जापान साउथ कोरिया जर्मनी और रशिया को देश हला ए पांचटा देश हला मैन्युफैक्चरिंग रे 30%. सो आमे कहलु जदी एटा आमे 16% रु 25% करिबा ताले आमे भी गोटे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस हबा. बुझि पड़छो तो लॉजिक बुझछो तो. It will also create, please note down, 100 million jobs in a year's time. That means 10 million jobs. Please note down, amara Bharat re every year 12 million people are applying for jobs. Please note down, 10 to 12 million people are applying for different kinds of jobs. तमे जेमति ओएस परीक्षा दोचो किछि इंजीनियर्स में दोचंती किछि किरानिया पे दोचंती बुझि पड़छो तो 10 to 12 million people are coming. So आमे से डॉक्यूमेंट रे कलु जे आमे दि मैन्युफैक्चरिंग जोन करिवु ताले प्रति वर्ष 10 मिलियन लोक एडिशनल आसी परिबे. बुझि पड़छो मैन्युफैक्चरिंग रे सबुटू एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ता होची बेस्ट. तो स्टील प्लांट टे कल स्टील प्लांट कले ता संगे स्कूल टे हबो रोड टे हबो हॉस्पिटल टे हबो बुझि पड़छो तो. सो आमे को सो ए कथा उडा का 20 चली गलानी बहुत दिन चली गलानी किछि गालुआमी हेछि किछि होनी. Now the share of manufacturing has come down from 16%
now to 13%. Please note down. The share of manufacturing, our image desota amar bahut desha achanti with all these IITians, the manufacturing share has come down to how much? 12.13%. So now there is a new mission on manufacturing. NMM 2025. माने से कहूनी जे आगुरु गोटे थिला सर एनएमजेड पॉलिसी थिला 2011 रे मु गोटे आर्टिकल लिखि काली बाहरिबो माने गोटे मु कहली ताकू जे चीफ इकोनॉमिक अरे कहर 2011 रे थिला से तू जिमति कहू जे आमे प्रथमे डिस्कवर करिछु सेथरे से कहउचंती जे आमे ये 12.5 टाकू 25% करिया बुझलो तो का भितरे 20-35 रे आमे आउथरे इलेक्शन हबो दिथरे इलेक्शन तो जितिबा 20-35 पर्यंत आमे करिबा बुझि पड़छो तो आर यू आर नाउ फॉलोइंग मी दिस इज द न्यू मैन्युफैक्चरिंग न्यू मिशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन आसीबो रे न्यू मिशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग को सर कोन एनएनएम कोन सर एटा 2025 रे एंड हाउ मच जॉब्स विल क्रिएट 143 मिलियन 14 मिलियन आमे 14 मिलियन करिबो 10 मिलियन को आमे 14 मिलियन कर दो बुझो तो कथा अरे आर यू ऑल फॉलोइंग मी और नॉट तापरे प्लीज नोट डाउन आमर गोटे वन ऑफ द मेजर मिशंस दैट इंडिया हैज टेकन इज पीएलआई प्लीज नोट डाउन एथरे क्वेश्चन तमरा आसु तुम भलो करी मन रख बहुत चुंबक रे मु देइची पीएलआई आसला 2020 रे प्लीज नोट डाउन देयर इज अ सर्वे how PLI has functioned between 2021 to 2025. Please note down. There is a survey by Government of India. A jo PLI scheme ame koriche, how it is doing. Please note down. There is a survey now. Now it is available and the economic survey has mentioned this. Deepak. So as per this survey, there are 14 sectors. Jo ki productivity linked incentive diya jauchi. Bujhi porcho? So the result is that the average growth, please note down, average growth is around, export growth is around 10%. Please note down. A jo PLI heichi, please note down, this is very important. The results tum nale answer kar pariyoni, 250 word as pariyoni. A jo PLI scheme re, how many sectors are there? 14 sectors. What is the average growth in export? What is the average growth in import? 12%. Please note down. Average growth in export है 10%. Average increase होची export होची import हला 12%. तामने धरा हमें जो मोबाइल टा करूचे तार कंपोनेंट से कोटा होची बाहर के नहीं जाउची बुझी पड़छो तो कथाटा most of the export increase is through increase in import. Please note down. आमर जो एक्सपोर्ट उडा इंक्रीज होची ना एटा आमे इंडिया रो करूने आमे इंपोर्ट करके सेटा करूचे बुझ पड़छो तो कंपोनेंट्स करके तो जोड़ी के जो मोबाइल होची सो कंपोनेंट्स बाहर आणुचे आईफोन रो ताको एटे असेंबल करके आमे विकुचे बुझ पड़छो तो सो प्लीज नोट डाउन दैट आउट ऑफ दिस 14 sectors 3 sectors are doing very well गोटाला आईटी गोटला इलेक्ट्रॉनिक्स गोटाला सोलर पैनल आउ गोटाला स्पेशल स्टील प्लीज नोट डाउन कौन कौन हला एगुड़ा सब नोट कले तुमको 10 रु 8 मार्क मिलियो कौन कौन एरिया हला आईटी हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स सोलर पैनल एंड स्पेशल स्टील एथरे ग्रोथ हिच अराउंड 20% प्लीज 20 to 25%. Whereas automobile or textile rate, the growth is only around 7 to 8%. तमे तर PLI स्कीम कथा आसीबो तमे कहइबो जे सर 14 टा सेक्टर रे PLI इंट्रोड्यूस थला 4 टा से बुझि पड़छो PLI जो इंट्रोड्यूस हला 4 टा सेक्टर रे 20 to 25% ग्रोथ हिची किंतु ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल रे दिस ग्रोथ इज very modest. Now, what is the problem in manufacturing? We are all the time talking of the organized sector. Please note down, we are talking of the organized sector. Manufacturing re, amaro organized sector hala only 15%.
तापरे आसला तमरो एमएसएमईज आसला बुझी पड़छो पीएलआई हला कहा पे ऑर्गेनाइज सेक्टर रे बुझी पड़छो और एमएसएमई रे हला केतरा एंटरप्राइज अछंती 7.4 crore enterprises are there. Please note down. And they are employing 32.8 crore persons. It is the second largest employer after agriculture. Please note down. तमे MSME डाटा के भलो करी पढ़ो. All of you read the MSMEs and say economic survey इतने सुंदर बार बुझे ची दीटा पेज रे तो दे पढ़ी दो ताको भलो करी फर्स्ट चैप्टर टा पढ़ी दबो ताहले तमरा आउ किछि तमरा असुविधा नै both for prelims and main first chapter state of Indian economy जो chapter 1 टा अछि सेटा टी पढ़ी दबो जोटा न बुझी पारे मते पचार दबो किंतु by and large MSME is 7.5 and they contribute how much please note down 31% of the GDP. GDP ro 1/3 is being contributed by MSMEs and they contribute almost 50% of the exports. कौन सब डाटा रहला MSME रे 7.4 crore enterprises, about 33 crore persons are engaged there. It is serving 31% of the GDP and 48.5% of the export. ताले कौन difficulty है? Please note down. The biggest difficulty होची जो micro enterprises. ये जो 7.4 crore enterprises अच्छी. Please note down. 85% are micro enterprises. ये जो बुझी पड़छो MSME रे केते रहले 7.4 crore जो enterprise रहला. What is the share of micro enterprises? About 85%. So the economic survey has written that the micro enterprises are not doing well. Amar manufacturing ta kahe ki bhalo करनी because the micro enterprises are not doing well. Please note down. Our micro enterprises माने तमर प्राय 5 कोटी about 5 crore enterprises. अरे 7.5 को into 85% कितना आला? Around 5 crore enterprises are not doing well. And one of the reasons होची, like please note down, one of the reasons होची accessing formal credit. But a World Bank survey होची, it says 30% of the difficulty of the micro enterprises is due to difficulty in accessing formal credit due to limited collateral and documentation readiness. So they parnanti collateral they par tamku loan miluni बुझी पड़छो. So तीनटा कारण हला. Please note down. Micro enterprise कौन को problem है? गोटे हला access to credit, a formal. Please note down. Access to formal credit, access to technology, और third हला quality of manpower. Please note down. मोटा मोटा कथा तमे एठी इकोनॉमिक्स आंसर करनो, but this is enough. कौन तार हमर मैन्युफैक्चर कौन डिफिकल्टी हला ताले हमरो माइक्रो एंटरप्राइजेस गुडा करो एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट डिफिकल्टी होची लिमिटेड कोल पे एंड टेक्नोलॉजी आ क्वालिटी ऑफ मैनपावर. द लास्ट कथा से लिखिची बुझो तो एई जो से तार जो चैप्टर टी अछि ऑन मैन्युफैक्चरिंग ठीक इकोनॉमिक सर्विस रे पढि दो एते सुंदर लिखिचंती सो ब्यूटीफुल. मु काल राती सारा तक बसी पढिली मुझे न पढ़ले पुणी कौन केम जानिबो केते डीपली केम जानिबो. तापर प्लीज नोट डाउन आमे कोच हमर लॉजिस्टिक्स रा बहुत बढ़िया अछि. हमर केते रैंक अछि ओनली 38. हमर रैंक होछि 38. सो therefore the logistics must be also improved. तापर कहला R&D allocation होछि जमा 0.8%. R&D and innovation अरे तुम मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी किमति बढ़िबो तुम यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी किछि इंप्रूव प्रोडक्ट करिवो क्वालिटी इंप्रूव करिवो. एंड लास्ट हला इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल वैल्यू चेन बुझी पड़छो. तले कौन हला हमर जो बेसिक मिशन रे मेन डिफिकल्टी हला हमर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन सो वी नीड टू लुक इनटू दिस. हमर सब बेले एम्फासिस रहला बड़ बड़ियां ऊपर तेलिया मुंडरे तेल तेलिया मुंडरे तेल गोटे ओडियार कथा नहीं तेलिया मुंडरे तेल आमर तेलिया मुंडरे तेल
आमर आ गोटे एटा नोट करो मते दीपक भी थरे कहूतला आमर न्यू लेबर कोड एटा ऊपर शॉर्ट नोट आस पारे प्लीज नोट डाउन आमर ओटा न्यू लेबर कोड आमर होची प्लीज नोट डाउन one of the there are two reasons why manufacturing is affected in India apart from micro enterprises. Please note down gotala land acquisition, please note down, and the labor laws. तुमको दी कहा जीवो रिना कौन तीनटा मेन रीजन गोटाला micro enterprises are not doing well, तापर land acquisition is becoming a huge problem, third हला labor reforms. Are you all getting me? Now the government has now introduced तमे एटा को नोट करो एटा शॉर्ट नोट भी आसी पारे लेबर कोड्स न्यू लेबर कोड्स एटा टिके तमे देखो आगुरु 29 टा लेबर कोड थिला आगुरु 29 टा लेबर कोड थिला नाउ इट हैज बीन ठीक है ठीक है So, पानी टी पठोरे so ये जो 29 टा कोड अच्छी please note down firstly these codes have been now integrated to 4 codes please note down now the 4 codes please note down one is for wages one is for industrial relations तमे किमिति तमे वर्कंग सारे पेसी आसीबो how do you interact with the laborers ta prala social security what kind of security safeguards you have and occupational safety kon hala wages IR social security occupational safety please note down for the first time the new labor reforms are looking at gig workers as normal workers. They are also now part of Factory Act. Gig workers are part of. Acha. Tapare dekhiyo, please note down mandatory appointment letter. The new labor code mandates mandatory appointment letters. It has been discovered that almost 80% of the people who are working, they do not have a contract. Please note down in India. 80% they found do not have an appointment letter. Contract, right? जोन सो जति सो छन तो ठैजु जो तो खाया दोचंती हमको दोचंती सब जोमाटो फोमाटो जति सब अछंती so they are also now covered under social security and all आगु तगर किसी सिक्योरिटी फिक्योरिटी किछ न थैंक यू तगर किसी सिक्योरिटी नथिला बुझला तो so this is a very big thank you. So now mandatory appointment letters. One of the biggest issue in India is the जो मन सब regular appointment हमें कहते regular workers अछंती even they do not have a proper appointment letter कि contract तंगर नहीं ताकि तो कुछ 10,000 नबू तू परे तो चिट्ठी दबाओ sen कुछ mandatory appointment तर please note down portable social security for migrant workers please note down this is a very important thing जो ना migrant workers जी बिहार आसी काम करूचंती से यदि बिहार रु गले ओडिशा आसले एमते नाही जे तांको की सोशल सिक्युरिटी रहबो सो सोशल सिक्युरिटी विल मूव विथ द माइग्रेंट वर्कर्स से नले सर्वहारा है कि बसतिले 5 कोटी रु 7 कोटी लोक जोडा काम करूचन सो बाहर काम करूचंती सो दे डिड नॉट हैव एनी सोशल सिक्युरिटी इट्स अ very good thing that they have done please note down today now this is a minimum wage note karo minimum wage timely payment and there would be a national floor wage माने गोटे देश रे गोटे मिनिमम 310 टंका गोटे नेशनल मिनिमम रखी माने यू कैन हैव मोर देन दैट किंतु ता तळु को तमे देई परिबो नाही केता वैलिड करे टाइम के बारे एग्जैक्टली सोशल सिक्युरिटी हला सेला माने एसेंशियली तमे रिट्रेंच्ड हेलो
कि तुम देह खराब हला कि तुम हला रिटर्न्स हला एउडा का सब ता मेडिकल बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी माने मोर मने अछि आमे जेतबेले मतलब बॉम्बे रे थिली सो सेठी आमे गोटे मेस थिला हमर गोटे ऑफिसर्स मेस थिला सेठी जो जो पिला सो रोसे करथिले गोटे पिला को निया लागला so there was no social security for him माने से जो तार जे पाउता 7-8 हजार पाउतला खाउतला जे होतला सो आमे सब वी कबल टुगेदर मनी ताकू देगिरी देखेलु सेटु मु जानिली जे केते डिफिकल्ट बुझलो तो so it's a very important medical insurance is a very important aspect minimum wage please note down as per the earlier labor laws women cannot work in night shift now they have said that they can work at night with consent by taking their consent स्त्री लोक माने भी काम करि परिबे बुझि परछो consent तापर गोटे बहुत इंपोर्टेंट फीचर दोची गोटे रीस्किलिंग फंड्स मन करछन्ती रीस्किलिंग फंड करछन्ती जदि कि रिट्रेंच हे जिवो ताले 15 दिन रो वेज would be kept from everybody for retraining the retrenched worker मु एतले फ्रांस को जाइथिली 98 रे in 1980 98 I had gone to France so सेठी आमे गोटे फैक्ट्री देखिया पे जाइथिलु कलाम संग संग जाइथिलु तो सेठी डायरेक्टर थिले सुन टिके केते इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन सो आमे लंच पे तळे गलु जाउथुलु कैंटीन को जाउथुलु तो सेतबेले देखली से माने जे डायरेक्टर्स टोल्ड अस जे आप मन आपको जानतो हमको कूपन दे देले आ मु टिके आछि गोटे स्त्रीलो को थिला से चश्मा लगथिला डार्क ग्लासेस पिनथिला सेटू ता संगे से कथा होतला से डायरेक्टर ता टेस्नर ता ना so after 15 minutes he joined us so I asked him mukili she is one of your retired employees sekala nice say she lost her eyesight so to mukili what is the benefit to them and what do they get se कहला जे से माने जो माने सब एमती they lose their eye or limbs and all their entire salary is protected they retain the same house and if they want to work they can come here on a voluntary basis मु सेटू जानली जे उटे डेवलप्ड देशर कोन माने what is the difference between a developed country and developed country then he said जे you know Miss Mishra this is one of the biggest issues in France जे आमन को सोशल सिक्योरिटी पाई आम दरमारु 10% में दो फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ पीपल हु मे लूज देयर जॉब जो पचाला 10% इज द सोशल माने द फ्रांस रे छोटो मैक्सिमम सोशल सिक्योरिटी पाई लोक दियंती सेते धनी लोक नाइ मो 10 टका काई देबी किंतु तांकर सेमते अछि बोली ताकर सुस्थ समाज गोटे भल सुस्थ समाज रे जदि आमे जदि किछि पैसा न करिवा न दवा So reskilling fund and employment gain in organized sector is around 1 to 2%. ए जो नुआ लेबर स्कीम हला कोटे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टडी हेची as per which the employment gain it also introduce हेकरी employment gain is almost 1 to 2%. जो माने कहउतले जे एटा गोटा कोर्ट रे हेले employment खराब होबो difficult that is not the case. It is a very good moment तो सरा मन रखियो कि लेबर कोड ता पढि कि जाइतिबो तमर एटा क्वेश्चन आसीबार एउडा सब पोटेंशियल क्वेश्चन आसी बुझि परछो तो कथा so now friends we will come to we have finished the first area बुझो तो we have finished the economic survey तापर हमें आसीबा हमर टंकाटा falling rupee ना एटा 75 टका थिला 21-22 रे now it has come down to 92 and the fall this year is almost 10%. Please note down any variation beyond 5% is considered to be unreasonable. Then you say that the currency is unstable. A currency is stable if the variation is between plus minus 5. Plus minus 5 jodi haba to variation hochi we do not say the currency is unstable
किंतु आमर जेहेतु around 10% ହେଇଛି. Now many people say if depreciation is there, it will be beneficial for the for exporters, but that is not the case. That is not the case because, as I mentioned, amara most of the export hochi import upre dependent. Buchcho to? Now, one of the reasons, one of the things people are saying, amara GDP ete high achi, inflation low achi, current account deficit low achi. Why is still the rupee falling? This has become a huge puzzle. There are two very, very good articles which have come, one in Hindu and the other in Business Standard. And in the economic survey also, there is a very nice chapter on this, on falling rupee. Very, very good chapter. Mu taku summarize karchi. Tara main reason hala, please note down, je amara hochi, amara external capital, amar jo external, amar jo flow of money, jo hochi, that is showing huge imbalance. The flow of dollar into India, the flow of euro into India, outflow of there is a huge imbalance. Joti generally balanced rochi, seiti imti fall habani. So now please note down, amara export hochi 37 billion, import hochi 62 billion. Please note down, per month amara kete am export koruche 37 billion, our export import koruche kete 62. So that means around $25 billion amara घाटा रोची सब बेले हम मतलब किणुचे बुझी पड़छ when you are buying goods सब बेले बेसी डिमांड होची डॉलर पे बुझी पड़छ जतले इंपोर्ट करचे 62 एक्सपोर्ट करचे केते 37 so there is a gap of about $25 billion तापर please note down foreign direct investment जो inflow is only 36 billion. Please note down माने outflow of FDI our inflow of FDI माने भारत रे जो इन्वेस्टमेंट कले that is inflow जो भारत माने बाहर जोटा इन्वेस्ट कले that is outflow. Are you getting my point? So when you are talking of FDI we should talk of net FDI. बुझी पड़छो आमे सब कहूचे जे आबरो इनफ्लो होची 82 बिलियन किंतु आउटफ्लो होची अराउंड $50 billion. तामने आमर जो माने टाटा अछंती बिरला अछंती एवं अंबानी अछंती they prefer to invest L&T अच्छी they prefer to invest in China in Latin America country. So please note down FDI inflow is only 36 billion. So that is please note down it is only 1.7% of GDP which was around 3% earlier. Our FDI was around 3% of our GDP. Now it has come down to less than 2%. Net FDI, please note down, net FDI is today about 1.7% of GDP, whereas it was around 3%. Out hala FPI. FPI hala, what is FPI? These are when companies buy shares in our market. These are portfolio investment. Gotala foreign direct investment. What is the difference between the two? FDI और FPI रे कौन difference है? FDI है गोटे बाहर कंपनी तम कंपनी रे पैसा लगेला for long term investment. Please note FDI is for investment. When a foreign company puts money into an Indian company for long term investment, it is known as FDI. Sir, Sir, long term means minimum how many years? See, it has to be more than 1 year. Normally, it's a good question. Normally, a project would be minimum 3 years, 3 to 10 years. हमारा जो project और road कलो कि तबे construction कलो जहाँ भी कलो minimum 3 years लागुची. So that is why we call it as a long term investment. Okay. A long term investment somewhere, please note down, you cannot withdraw your equity. Tara tobe gote American company. Okay. Now supposing you have put $100 million into a company. You cannot withdraw that money before 3 years.
तमे यदि बाहर गोटे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन धर इंडिया रे तमे इन्वेस्ट कलो जिम तमरा ए जोडे Z1 बिल्डर्स अछि so it has come through FDI so when they have put money they cannot take away the money halfway through till the project is not completed they can take out बुझी पड़छो तो but FPI होची foreign कौन कहली portfolio investment allow when foreign companies are buying the shares in the Indian market गोटे हला buying shares in Indian market आ गोटे हला investing in India so which is better Sir, but investment also is getting converted to shares or equities. but that money is not going out now Okay. in case of FPI is a very Yes, good sir. question Yes, sir. माने देश को दीटा रूट रे पैसा आछी please note down Again. there are two ways that money is coming to your country गोटे हला through the FDI route and the other is through the FPI route FPI is known as hot money please note down FPI is known as hot money माने जदि तंकर भलो पैसा पाए their share prices भलो हला ताले they will keep here if the share prices fall they will withdraw the money they will sell the shares but in case of FDI तंकर profit हो कि loss हो their money is locked up here have you all followed me आमे जेते बुझी पड़छो आमे तळे इन्वेस्टमेंट कथा बुझी पड़छो तो आमे तळे इन्वेस्टमेंट कथा कहूचे सेतेबेले देयर आर टू वेज वन इज FDI the other is FPI हला हॉट मनी तमो देश रे यदि बाजा बाजिला ताले टंका चली जिवो सो सेमिति गोटे क्राइसिस प्लीज नोट इन 1997 there was a crisis in Thailand 97 98 there was a crisis in Thailand because most of the money that came was FPI money बुझी पड़छो नै आमे गोटे देश रे सुनो आम देश रे टंका लाग कोळे टंका लागिछि से टंकाटा लागिछि लॉन्ग टर्म पे लागिछि कि से गोटे शेयर्स रे लागिछि गोटे बाहर कंपनी तमरो शेयर्स किनि किनि टंका लगैछि जेतेबेले when those shares are doing well they will keep it but when the shares are not doing well they will sell it off and go away there is no restriction on that so please note down in 1997 to 1998 all Asian countries like Thailand like Singapore like Taiwan Malaysia they had a serious crisis because most of the investments were in the form of FPI and not in form of FDI तेणु सबु बेले देशटा जो देश रे बेसी FDI आछि सेही देशटा सेते भलो are you all following me तोरा FPI हमरो लास्ट ईयर आमे 40 बिलियन आस्तेला ए वर्ष लाको -4 please note down last year our FPI inflow portfolio investment was plus 40 billion कारण last year सन भाबुतले हमें भलो करछु भलो पैसा अछि किंतु एई वर्ष around $4 billion has been withdrawn shares have been sold बुझी पड़छु तो धर चाइना हला चाइना रे FDI is around $150 billion please note down China receives $150 billion in FDI it is a place for destination for investment कहइतली प्रथम आरंभ करतली जे इंडिया केतेबेले when it is a preferred place of destination of investment जेतेबेले FDI बेसी आसी बुझी पड़छो आगुरु केते आसला 3% आसला एबे आसी 1.7% बुझी पड़छो ना नहीं बुझी पड़ ना माने कथा होची माने जदी बेसी हमर FDI आसी FDI earlier was around 3% सेति पई हमर ग्रोथ was also very high अरे 2007 2008 रे हमर 8% ग्रोथ होतला काहे की बहुत FDI आस्तला अरे they were also contributing to the growth story of India FPI कोन होची these are all short term money आजी किनिमे काली बिकी देबे so therefore India is therefore what is the lesson that India is please note down is not a preferred place of long term investment जदि long term investment हेता आमे FPI पे मु व्यस्त नो
मु एफडीआई पे व्यस्त होनी आई एम वरीड दैट हमरो नेट एफडीआई इज वेरी लो आमर 82 जदि बिलियन आसंता आउ जदि बहुत कम बाहर को जानता ताहले आमे बहुत बढ़िया होता किंतु आमर 82 जाउची इयाडे जो टाटा फाटा सब मोदी संगे फांसे करी फोटो उठुचंदी किंतु देखा को जाकि बाहर इन्वेस्ट करचंदी मु थरे एलएनटी जे चेयरमैन थिले नायक मतलब मिनिस्टर थिली से आस्तिले मो रूम को चा पिया पे आस्तिले मु ताऊ कहली मु कहली अरे नायक आपण काहे कोन बाहर कोन कोटी इते टका काहे बाहर इन्वेस्ट करचंदी कहले मिस्टर मिश्रा बाहर करवाटा इते आनंद कथा कहबार नै किछि झमेला नै कहले सेठी प्रॉफिट कलो से प्रॉफिट नेकी तमे आसिलो एठी 50 लोकन को 50 ब्यूरोक्रेट को पैसा दबा 50 लोक इंडिया इज ए प्लेस ऑफ ह्यूज हैसल्स तिलकटा लगेला पर एयरपोर्ट रे तापर इमिते सब पैसा खाया पे लोक अछंती कस्टम्स टू आरंभ करी तम पैसा खाइबार चोरी करिवार लव हेले इंडिया इज ए प्लेस ऑफ करप्शन एवरीवेयर यू हैव हैसल्स आर यू ऑल गेटिंग मी दिस इज द रियलिटी व्हेन यू बिकम सिविल सर्वेंट्स you will realize that you are not a object of facilitation you are an object of extortion केम टका खाइबी आईपीएस अफसर ले केम खाइबी गोटे काम्या मिश्र मोर स्टूडेंट जे आईपीएस अफसर छाड़ देला एबे से लिखि किम सब पैसा खाउचंती सब मोनेटाइज करचंती बेल देकरी माने मर्डरर्स को बेल देकरी यंग आईपीएस माने 5 लाख सब बिहार सब रेट हे जाई मर्डर पई केते बेल पई सब पैसा हे जाई Are you all getting me? So what I'm trying to say, India is not a place of preferred long-term investment, and therefore, for export competitiveness, so two things are required. One is a stable currency and a stable FDI inflow, and export competitiveness and lower manufacturing cost. बुझी पड़छो? अरे पूरा कथाटा बुझल कि नहीं? तमें जदि चाहूचो जे तम देशटा इज ए प्रेफर्ड प्लेस मेरा भारत महान सब यहीं पर आएंगे तिलक लगाएंगे तिलक लगाने के बाद उनको आप ऐसे चूना लगाते हैं तो वो कहेगा कि मैं यहाँ एकदम नहीं आऊंगा सर यहाँ जो है ना दौड़ के जाओ भागो यहाँ से भागो वहां से सो वी हैव टू टेक ए लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम इंडोनेशिया प्लीज नोट डाउन व्हाट आर द लेसन्स वी नीड टू टेक फ्रॉम इंडोनेशिया वियतनाम एंड ताइवान Please note down. Now, एवढा कोण करचंती बदमाशा चिंची एवढा कोण करचंती what are these fellows doing what they have done they have integrated please note down they have integrated their manufacturing with global value chain there are tomato गोटा global chain माने जो value chain अछि so they have become part of that value chain there are textile hela apparel hela so they are part of the global value chain कौन तला note करो कौन हला first हला manufacturing cost should be low you should have a stable currency your export should be competitive and you should have a platform base for multinational enterprises जो बाहर बड़ बड़ अछंती तांको संगरे तमे किमती जोड़ी हबो बुझी पड़छो तांको संगरे जोड़ी नहल तमे कह मु तांक से कंपीट करिवि मु तांको उड़े देबी सिमते हबो कुड उड़िवो से क्वाड तमे उड़े दबो तुम से कोन बुझछो न कथा तमे कहबो कर अरे बुझी पड़छो ना नहीं ना बुझियोनी स्टेबल रुपी माने मीनिंग ता बुझछो जे तमर रुपीटा अनस्टेबल हला तार काहे को अनस्टेबल होची कारण तमरो एफडीआई इनफ्लोटा कम होची ना नहीं तमे एफडीआई टा आसुनी तमरो माने यू आर डिमांडिंग मोर फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज देन यू आर एबल टू वी कम टू द फाइनल थिंग व्हिच इज दिस इंडो यू फॉरेन ट्रेड agreement please note down देखो so we'll quickly go into this we'll finish with this है ना
Now, this is a very important area. Bhalo kari note karo. First, we must understand how trade has taken a direction after the Second World War. I mean, World War Second पूर्व जाइकरी आमे ता पर को आसीबा. Please note down that before the Second World War, every country believed in protection and not in free trade. समस्ते निज देश रे हाई टैरिफ देकरी बाहर जेमती जिंस ना from protection. It is called a protectionism. तापरे 1948 रे कोटा संस्था हला ताना होची GATT, General Agreement on Trade and Tariff. एथरे 1948 मसर हला सेथरे the agreement was जे सबु देश टैरिफ कमेबे on goods. Please note down, GATT रो ऑब्जेक्टिव हला reduce tariff on goods. आमे जो goods आमदानी रफ्तानी हबो, tariff should be either 0 or it should be minimum. 8 हला 48 रे. तापरे please note down, Europe रे, please note down, Europe रे they formed European Union, and that idea was mooted by a person called Monnet. He was a French diplomat. Jean Monnet, European Union रो father तो कह दी. कौन ता ना मानु से तर बापा के ता ना होची Jean Monnet. Monnet कहला द्वितीय विश्व युद्ध परे जे ए जो विश्व युद्ध हला काहे केला जी it was based on a feeling that our country is more strong than the other country. So the theme was nationalism. Please note down. आमे जर्मन, आमे फ्रेंच, आमे इंग्लिश से कला जो नेशनलिज्म छाड़ी करी तमे ब्रदरहुड रे आस. कले ए जो नेशनलिज्म करी करी आमे जो झगड़ा करछे ए नेशनलिज्म को छाड़ी करी. So he was the first person, he said आमे यूरोपियंस माने सब some similar Christians आमे सब आमे काहे झगड़ा करछे बुझो तो. So he said कि let us try to look at our mutual advantage. So say prathame, please note down, he forged an alliance between France and Germany in matters of steel. Please note down, France और Germany. France and Germany तीजों का opponent क्या थे? अरे फ्रांस को तलतलांत करने लगी जर्मनी. They were the bitterest enemies. से कहला जर्मनी रे बहुत भल खणी अछि, आयरन ओर्स होची, आउ फ्रांस रे बढ़िया स्टील अच्छी मिल्स अच्छी. सो इफ वी फॉर्म अ यूनियन आमे वर्ल्ड को बेस्ट स्टील प्रोड्यूस कर. सो ही वाज द पर्सन हु सेड यूरोपियन कमीशन ऑन स्टील एंड माइंस. यूरोपियन कमीशन ऑन स्टील एंड माइंस. यूरोपियन कमीशन ऑन स्टील एंड माइंस कहला किए कहला जा मोने. कहा का विषय भीतर कहला फ्रांस एंड जर्मनी. से कहला से पूर्ण कथा छाड़ो, से भारत पाकिस्तान कथा छाड़ो, से सब छाड़ो भारत से कहला. सो देयरफॉर द होल यूनियन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड. द होल आइडिया ऑफ यूरोपियन यूनियन वाज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड brotherhood and have a common currency. Please note down, and have a common currency. And have what? A common currency called euro. जदि आमे common currency करिबा ताहले ए जो अमेरिका जो पाजी अछि ताको आमे चापा दे परिबा. अमेरिका जो दादागिरी करूची अमेरिका को किम दबेबा आमे? By having a common currency. And euro there will be no tariff. Please note down. See 27 टा देश भितरे no tariff. तमे जे जर्मनी एयरपोर्ट रे जिवो तांकर गोटे सला फ्री अछि ओनली फॉर यू. इंडियन हले रोको इंडिया में संगे संगे रोक के तुम जूता खोल के तुम चश्मा खोल के तुमको हालत खराब हो. सो यू लोग 27 देश बुझ पड़ो तो. सो दे आर फ्री, दे आर बॉर्डरलेस कंट्री, करेंसी समान, टैरिफ नहीं. एटा होची से जो पाजी ताना होची मोने जोगो एमते हेची. जा मोने कहला तमे ई नेशनलिज्म कहीं करूचो
brotherhood आना, cooperation आना, look at mutual advantage, look at mutual advantage. माने आज देश रे ताइवान और जापान सॉरी ताइवान और चाइना एकदम भीषण ताकर एनिमी किंतु जेते सब लैपटॉप होची कंपोनेंट्स असेंबल करची चाइना किंतु तार सॉफ्टवेयर पठोची किए ताइवान कोन बुझु तो अरे बुझी पड़छु कि नहीं मु जेतल जाइथिली वागा बॉर्डर जाइथिली मु मो स्त्री जाइथिलु 2012 रे माने ए जो खजुरी आ ए जो काजू एते सस्ता कहबार नहीं मो स्त्री कहला काहे के कसरे झगड़ा करछुंदी 5 किलो नवा काजू ने की जीव बहुत सस्ता एकदम टॉप क्वालिटी काजू very very cheap lovely carpets you get there okay so तापर हला WTO ठीक है बुझी पड़छु तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हला केबे 1900 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हला जे सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड प्लीज नोट डाउन सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड किंतु किंतु वर्तमान फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म नाउ वी आर कमिंग टू bilateralism okay so India's trade policy hela je ame we are also now trying to move towards more free trade agreement amar tinita country sangre free trade agreement hechi gota hela ki koi peribo ha UK au Oman, New Oman Zealand, yes Oman au UAE, no New Zealand, New Zealand. Three countries agra hamara FTA hechi so last year we had with UK and now we are having with European Union okay ठीक है एटा देश टी देख टी ए जो टेबल टा टी देख केते ट्रिलियन डॉलर होची यूएसए केते होची केते लोक सेठी 34 कोटी 34 कोटी रे 30 तार पर कैपिटा इनकम केते 389,000 तांकर इंडिया ताको केते एक्सपोर्ट करूची 86.5 एंटायर यूरोपियन यूनियन देखो 27 टा देशर केते ताकर जीडीपी केते बुझी पड़छो आमे तले यू करछे बहुत मदर ऑफ ऑल डील्स मु के लिए अरे मदर तो होची यूएसए ये केबे मदर है यू बुझी पड़छो तो कथा I have written an article yesterday tomorrow it will come out अरे से मदर किते हला मदर तो होची 86 प्लीज नोट डाउन इंडिया रा जो 388 बिलियन जो करूची मैक्सिमम 20% होची काको दैट पाजी ट्रम्प पसेगिरी हमर सब माने नष्ट दोस्त विध्वस्त कर देछि टेक्सटाइल सेक्टर 2 लाख लोक have lost their jobs gems and jewelry around 2 lakh people shrimp ए जो चिंगुड़ी माछ hugely affected हमर चांदली so China केते this Paji has about $20 trillion और जापान को देखो इंडिया हला so please remember whenever we are talking of this thing we have to know the size of the country so which are the countries which matter China matters Japan matters UK matters so therefore these are the countries which matter अब FTA UK से कले सही थे प्लीज नोट डाउन दैट प्लीज फर्स्ट नोट डाउन करो जे यू और यूके रे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन प्लीज नोट डाउन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन दिस इज द फर्स्ट थिंग रिडक्शन इन टैरिफ इंडिया कला कहा ऊपर देखो विस्की जीन ऑटो पार्ट्स मेडिकल डिवाइसेस सॉफ्ट ड्रिंक एंड चॉकलेट कौन कौन दारू गाड़ी मेडिकल डिवाइसेस आउ सॉफ्ट ड्रिंक एंड चॉकलेट यूरो मध्य समान बुझलो तो ए गुडा सब आम देश को आसीबो सस्ता आसी इंडिया को कोटा कोटा एक्सक्लूड हेसी प्लीज नोट डाउन डायरी एटा प्लीज नोट डाउन डायरी प्रोडक्ट्स एप्पल एंड चीज प्लीज नोट डाउन एटा तीनटा जिंस एकदम सख्त मना एप्पल चीज आउ डेयरी प्रोडक्ट्स बुझी पड़छो
तापरे एक्सपोर्ट कोथरे हबो प्लीज नोट डाउन ऑल लेबर इंटेंसिव एरियाज प्लीज नोट और लेबर इंटेंसिव एरियाज कौन हला टेक्सटाइल टॉयज लेदर फुटवेयर जेम्स एंड ज्वेलरी एगुड़ा सब बुझी पड़छ तो दिस इज सो जेते गुटा हमर लेबर इंटेंसिव सेक्टर अछि कौन अछि टेक्सटाइल जेम्स एंड ज्वेलरी एगुड़ा सब हला so import tariff or auto and import please note down whether it is UK or EU or USA all of them are interested for their automobiles to come to India please note down the major thrust please note down major thrust hochi they are very keen to sell luxury cars in India today it is having a tariff of 100 to 110%. Please note down. अरे बुझी पड़ चुकी नहीं सक्सेसफुल को मेन कथा तक मेन आई हो चुकी ऊपर कहा ऊपर ऑटोमोबाइल सेक्टर हाई एंड लग्जरी एंड आल्सो ईवी व्हीकल्स अरे बुझ चुकी रहे हाई एंड लग्जरी कार्स ईवी व्हीकल्स दीज आर दी मेन थिंग आउ दारू दारू सस्ता रे मिलिबो वाइन टिके सस्ता रे मिलिबो सेटा भी 100% एबे दारू सब सस्ता ही जीवो बुझले तो आउ तो हमर जो यूरोपियन यूनियन हला ए जो तार जो चीफ ता ना होची उर्सुला ए उर्सुला टे जाई गिरी जेते बेले प्रथमे ट्रम्प बढ़ेला टैरिफ बढ़ेला जाकी ता गोड़ धरला सर काहे कि अपन बढ़ो चंती तो ट्रम्प कहला ठीक अछि किंतु एबे से पूरा एकदम ट्रम्प विरुद्ध है से कोची नाउ वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम ट्रेड एज अ वेपन प्लीज नोट मूव अवे फ्रॉम ट्रेड एज अ वेपन टू रूल बेस्ड कोऑपरेशन माने रूल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स थिला वी शुड फॉलो दैट एंड वी शुड नॉट यूज ट्रेड as a weapon. So now please note down, ये जो deal टा हला, it will actually fructify only after approval by the EU Parliament. Please note down, and that will take about a year. तो समस्ते बहुत चुना खाउचंती, ये सब संस्था है जो से वर्षे परे आकाश कोया चिल्का माछी वाला से आहुरी वर्षे परे ये सब हबो एबटू आमे एमिति कोछि जेमिति कालीटू सब सस्ता ही जो सेमिति नाही कोन बुझछो तो you will gain from high end vehicles luxury cars EV vehicles wine and medical devices again बुझि पड़छो तो so please write in your answer that both EU and UK have similar interest because here the tariffs are around 100% भारत रे 100% tariff बसचिया ऊपर Our India from textile and apparel and marine products. Okay, so please note down. Textile is a major area of interest. You deal right. Textile is a major area of interest because the EU has a market of $95 billion. European Union re annual demand kurchunti around 95 billion from textile. Our India share kete 6%. And what is the share of China and Bangladesh? Have you understood? Buji porcho. China and Bangladesh hochi 50%, ame hochi 6%. Buchu to? Na samote jo chuda khauchunti, je amaro mane textile ame target rakchu 38 billion ru $100 billion. Please note down, unless your textile is less costly than Bangladesh textile, why should somebody wear your apparel? मत कहलो ठीक से कहीं तुम सेमिस पिंदियो मत कहलो तुमरो टॉप कहीं से पिंदियो जदि ताटो सस्ता रे पाइबो बांग्लादेश रे पाइबो बुझि पड़छो अरे आर यू फॉलोइंग मी और नॉट सो एटा जो यूएसए के जो डील हला ना this deal would be successful only when your apparel is cheaper than Bangladesh.
मोर मने अछि मु 95 तो कहिथिले 95 रे फर्स्ट टाइम तला अमेरिका गली फर्स्ट टाइम मु से देशटा देखि से एयरपोर्ट देखि मु बसी पड़ली मु कहले ई कोन देशटा ये मु जनरली डोंट सफर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स किंतु अमेरिका जाइकरी फर्स्ट टाइम मो लाइफ रे से जेएफ के केनेडी एयरपोर्ट देखिकरी मोर माने हताश हे गेली मु कहले कोन ई जगह का सेठू जो होटल गली से बहुत बड़ा मार्केट था पछरे संध्याळे गली टी बुलिया पे सेठू मो पुओ मते कहतला जे से इंजीनियरिंग पढुतला जे मो पे गोटे टी शर्ट आनिबो टी शर्ट मु देखला टी शर्ट पूरा कंप्लीट फ्लोर टी शर्ट पड़छि सेठू जोटा सबुटो भल लागिला दैट वाज फ्रॉम बांग्लादेश द चीपेस्ट तो मु कहली इटा टैग टा बाहर कर देले हबो किंतु से बांग्लादेश से बढ़िया के साथ चपकेज ता भीतरे से तो मु पचाली मु कहले रे बांग्लादेश रा से टी शर्ट कहले हां इटी बांग्लादेश टी शर्ट इज वेरी चीप एंड बिलीव मी नो कंट्री चार्जेस एनी टैरिफ माने व्हेन इट कम्स टू यूएसए दे डोंट अट्रैक्ट एनी टैरिफ सो बांग्लादेश रा मु कहले नाही मु एटा बहुत खराब लागियो ताऊ कहि बांग्लादेश किंतु आई बॉट हिम टू शर्ट्स वन फ्रॉम बांग्लादेश एंड वन फ्रॉम चाइना. So, are you all following me? So, in a market where you have t-shirts from almost 140 countries, 140 टा देश को देशर जिंस नाही जेटिया कहबा सबु जिनिस सेठी everybody is trying to compete there. Are you all getting me? आमे जो चूड़ा खाउचे जे जो हे गला आमे टेक्सटाइल आमे बहुत बढ़िया अरे चूड़ा जिबे कुआडे सेबन भी छन को बुझु तो and please note down the tariff rate. What tariff you is charging Bangladesh and what tariff they will charge from India, that difference will also be very important. Please note down. Now all of them are now enjoying zero tariff. So unless India enjoys zero tariff, unless our cost is less than the Bangladeshi cost, this pipe dream that our textile export will increase will not happen. Have you understood? या पूर्व जो कहते export competitiveness बुझलो? Have you understood now? खाली FTA deal हे गले तमरो export टा increase करिवले. Your export will increase only when you are competitive and your quality is also good. Please note down. Export depends on three things. Please note down. Cost. Export is a function of three things. Price, cost, quality, and timely delivery. Timely delivery. कहिबे 3 मास रे पहुंचियो 6 मास रे पहुंचियो सॉरी सर टी लेट हे गला. Are you getting my point? So India has a very poor record on all the three accounts. एमती को गोटे नहीं जेटा मोर प्राइस टा बेटर प्राइस रे खराब क्वालिटी खराब डेलीवरी गालुआ नंबर 1 से कहबो सर कोन पे सर कोन करबी सर मु जाईथिली सर जे ट्रेन रे टिकट मिललानी सर बगी रे जगह नथला सर कोन करबा शिप रे जगह नथला कोन करबा बुझो तो so are you all getting me? So it's very important just to sum it up that our exports will increase not because of the FTA but only if our exports are more competitive. Are you all getting me? तबे देखो ट्रम्प किम करछि समस्त का टैरिफ डिक्रीज करछि देखो बांग्लादेश रा 3726 करछि वियतनाम रा 46 रु 20 करछि. Do you know why India is suffering? India is suffering because our tariff is 50, Bangladesh tariff kete 26. Are you all getting me? This is very, very important. So what is the way forward? This is the last slide. It is bhalo kir dekha ti chhabi mara chhabi. What is the way forward? It is too early to celebrate. ये जो डेंकी जो बाण फाण फुटौच से सब हबनी ये जो हैंडशेक चलेबनी. Now we need to pursue FTA with USA. Please note down. आमे समस्ते कहूचे बर्तमान भल हला गोटे पाजी ट्रम्प संगे आमको डील करथिले से पाजीटा होची सबुठो मोस्ट इंपोर्टेंट लोक
से पाजी को तमे राइट हैंड साइड रखियो पड़ियो उर्सुला काहे तो देखा गला सेटा काहे देखा गला because she knew she reduced from 20% to have you seen that अरे से काहे जाइतला सेठी की ताको बुझो तो एठी जो टाइग्रेस बडा होतला ट्रम्प पाखरे एकदम मुमु मुमु होतला बसिकरी से ता पाखे जो ठिया हितला सेतरे पूरा एकदम मुसा बडा होतला से मु ताको ट्रम्प रो फोटो देखुथि तारा से मुसा बडा ठिया हितला ता पाखरे मोदी पाखरे एकदम टाइग्रेस बडा ठिया हिति एकदम सर so it is too early to celebrate बुझी पड़छो तो try to understand very clearly we need to pursue FTA with the USA please note down आमे जो UK संगे हे गला US किंतु we have to see that we are बुझी पड़छो तो हमरो टैरिफ टा कबे तापरे we must make exports competitive please note down that is the most important thing आमे गोटे ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म गोटे फ्री ट्रेड जोन्स अच्छी they are not functioning well whereas they are functioning extremely well in China please note down free trade zone amar jo अच्छी जोड़ा सो export पे free trade zone करचे please note down FTZ free trade zones जो रखीचे जोड़ा का those zones are for export only so they are not doing well थोड़ा खाली सिटी माने खाली गल्फ करचंती गेस्ट हाउस करचंती so they are not using for good manufacturing one of the major reasons for the free trade zones which are not doing well is that this is not used for the purpose for which it has माने बुझी पड़छ कि फ्री ट्रेड जोन अछि सेथरे जम्मा किछि टैरिफ फरिफ नाही तार ऑब्जेक्टिव हला से माने जहां बने में सस्ता रे बने कि बाहर को एक्सपोर्ट करिवे किंतु इंडिया रे से जो जगह फगा सब पाई से जगह सब लॉन फन करी गल्फ फन करी गेस्ट हाउस करी बुलुछथि हॉस्पिटल करछथि किंतु मैन्युफैक्चर किंतु चाइना रे इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर बुझी पड़छ सो वी हैव टू सी दैट आमे ओटा भलो कथा करछे जे फ्रॉम कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ चाइना नाउ वी आर कमिंग टू कोऑपरेशन प्लीज नोट डाउन आमे कोदले चाइना 2020 रे गालवन जो क्राइसिस हला परे वी सेड that सबु टिकटॉक सब बंद किछि टिकटॉक काई बंद हो सबु से बजारी सब देखु टिकटॉक रे so from cancellation contract we have come to cooperation and collaboration are you all getting me आमे जेते बेले गोटे माने उछुलचे एकदम माने before we jump around के बहुत बढ़िया हला we have to see the reality so हमर को प्लेयर हले प्लीज नोट डाउन गोटे हला यूएसए गोटे मेजर प्लेयर हला आ गोटे हले यू हला आ गोटे रशिया हला आ गोटे हला चाइना हला प्लीज नोट डाउन इंडिया हैज टू कंटेन विथ 3 groups what are the 3 groups Rina USA यू रशिया आउ चाइना आमे भाबीबानी जे आमे यूके संगे कर देले आउ आमे पूरा जो जीता वो सिकंदर सेमती किछि नहीं सिकंदर फिकंदर किछि नहीं सिकंदर हवा पड़ियो तो रशिया संगे भी भलो संपर्क रखा पड़ियो बुझछो तो कथा सो चाइना संगे भलो संपर्क रखा पड़ियो प्लीज नोट डाउन that we just concluded a 10-year defense network agreement with USA for transfer of technology and joint production please note down ये रिसना या संगे बदमाशी हला किंतु याडे ट्रम्प संगे गोटे एग्रीमेंट हमर हेची जे आमे डिफेंस रे गोटे नेटवर्क एग्रीमेंट हबो जोथरे के आमे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिवो एंड वी आर इंटरेस्टेड टू सेट अप प्रोडक्शन इन इंडिया सेति पय युद्ध चलछि वर्तमान अमेरिका आउ रशिया भितर प्लीज नोट डाउन फॉर अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कोन जानलो जोटा जो ओसामा बिन लादेन को मारथिला जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट so stealth so stealth aircraft so please note down that USA रो main enemy USA रो जो national security strategy अछि सेते देखिछि please note down so they have given importance to China and European Union for America please note down for America please note down for America what counts are 2 countries गोटे हला China why China is important for them so that most of the
imports from China can be manufactured in USA. Why China is important? Those things they are importing from China, they would like to make in USA. Why is European Union important? Because they are like friends. Traditionally, please note down, traditionally, Western Europe and USA are partners, are friends. Till 1980, please note down, till 1980, from 1945 to 1980, केवल यूएसए रो डील होतला कहा संगरे वेस्टर्न यूरोप संगे जितने सबु फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबु ताकर सेठी कोतले से माने 80 मसे परे चाइना को आसले तापरे बेसमे इंडिया को आसले एटा किछि आसुथले किठी इरी खाली हमर छाप देखिया पे हाथरे चढ़ी बुलिया पे जयपुर आसले आर यू ऑल गेटिंग मी all these countries are you all getting me so they started coming to China only in 1980 otherwise before 1980 USA was only interacting with whom with Western Europe are you getting my point so European Union matters to them are you all getting me European Union matters to them China matters to them because it is taking away manufacturing jobs from them so therefore India kon karibo we have to also balance with everybody so we have to please note down we have to do a balancing act between whom USA EU China and Russia so this is the बुझी पड़छो and what a final kotha बुझी पड़छो ना नहीं मु तुमको डिक्टेट कर देबी तो 5 मिनट रे and finally please note down जे आमर गोटे सार्क बोली गोटे थिला साउथ एशिया जो कंट्री सब थिला एसोसिएशन थिला सेटा सला चुली को गलानी 2019 अरे बुझु कि नहीं इंडिया एमिति गोटे देश जार कहा से पडुनी ना पाकिस्तान से पडुची ना श्रीलंका से पडुची ना नेपाल से पडुची ना बांग्लादेश पडुची कहा से पडुनी समस्त संगे अपड़ माने एते माने मोदी सर एते चार्मिंग पर्सनालिटी तांको कहार ताको नेबर संगे तंगर पडु जेतरा हमर युद्ध हला जो हला तमरो कोन जो हला कोंडा सिंदूर हला किए तो पिठरे पड़ला किए पिठरे पड़ला इजराइल पड़ला पिठरे पड़ला रशिया अब किए पड़ला नो अदर कंट्री केम टू रेस्क्यू इट इज बिकॉज when I have written a beautiful article it will come out tomorrow it is because we are not encouraging regional economic cooperation we are not encouraging what regional economic cooperation regional cooperation SAFTA jo बुझी पड़छो तो जिमती यूरोपियन यूनियन so we have to take a lesson from European Union आज 2000 आज यूरोपियन यूनियन 13/1951 मसिया आज से 27टा देश एका संगरे दे आर स्पीकिंग इन वन वॉइस आर यू ऑल गेटिंग मी यूरोपियन बुझी पड़छो तो किंतु हमर कोन कहा को के अनुनंती ना यूनुस मोदी को अनुची ना पाकिस्तान सेट इंडिया को अनुची ना श्रीलंका अनुची इंडिया को के अनुनंती सो वी नीड टू हैव बुझी पड़छो तो सो प्लीज राइट डाउन इन 2 minutes we'll then finish it Trade is an engine of growth. Please note down. Trade is an engine of growth. Please write down. Trade is an engine of growth. Since 1990, India has been pursuing free trade agreement ties with several countries with success now achieved in Oman, New Zealand, UK and EU.
Full stop. With these FDAs, India will have access to nearly 2 billion people for its labor-intensive products like textiles, gems and jewelry, leather goods, and marine products. However, to derive full benefit of such FTAs, we need to reduce our manufacturing cost, make our exports competitive, of requisite quality, and deliver in time. Full stop. We need to draw lesson from China, which has become the biggest manufacturing hub of the world by ensuring that our industries work in tandem, with multinational enterprises as is being done by countries like Bangladesh and Cambodia. Full stop. Since USA is our major export destination, we need to fast track, FAST, the process of concluding FTA with USA. In a world where 4 powers dominate, namely USA, China, EU, and Russia, it would be in the interest of India, to maintain a balanced relationship,
relationship, balanced trade relationship with all these major powers. Finally, India must foster, foster the process of regional economic cooperation by activating SAFTA, which has remained dormant, since 2019. कि पूराटा लिखी गोटे पढ़ लो पढ़ किए गोटे पढ़ तुम लिख पूरा सब लिख तुम लिख किए लाउडली पढ़ो ट्रेड इज एन इंजन बड़ पार्टी कह हाँ ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ केमती हाँ India has been forcing FTA trials with several countries with success. Now it is in Oman, New Zealand, UK and UAE. थोड़ा टेबल के समझते हैं हाँ We have access to nearly 2 billion people for its labor-intensive products like textile, gems and jewelry, leather goods, and marine products. However, to derive full benefit of such FTAs, we need to reduce our manufacturing costs, make our export competitiveness of requisite quality and delivering time. We need to draw a lesson from China, which has become the biggest manufacturing hub of the world by ensuring that our industry is working tandem with multinational enterprises as is being done by countries like Bangladesh and Cambodia. Since USA is our major export destination, we need to fast track the process of concluding FTA with USA. In a world where four powers dominate, namely USA, China, Russia, and UAE, it would be in the interest of India to maintain a balanced trade relationship with all these major powers. Finally, India must foster the process of regional economic cooperation by activating SAFTA, which has remained dormant since 2019. एमती लिखिले 10 रु 9 आस जब बुझी पाल पूरा ठीक लागले लेखाटा ना नहीं लागुनी ना तो सब भल लेखाली एमती करिकरी चुंबक रे देखिकरी चिपुड़ी देले छेनाटा बाहरिबो हला एटा होसी पूरा छेना चोपा बाहरिबो हला एमती लिखिरे आसिले आईएएस कोन आईएफएस कोन सब जगह पास करी आसिबो हला एमती लेखुतलु बोली आमे सब आईएएस पाउतलु इकोनॉमिक स्टडीज पाउतलु बुझी पड़छो किछि बड़ कथा नो बड़ा क्लियर कथा हो कथा हला केता बाइला साडेटा हला ये नहीं ठीक है हैं जो कलेक्टर जो देइछि जी कहबो जो कलेक्टर जो ऑर्डर देइछि जो मुझे इनले 500 बिकी परिबे जे तमे कहलो को आर्टिकल था आगे केस जाउछि ओही के आर्टिकल को है केस हां आर्टिकल 21 25 how about please go down 19(1)(g). Please go down 19(1)(g). What so तुम सब एमती लड्डू लेके आथिबो देखा 19(1)(g). 19(1)(g) हला फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस ये मांस हलाल होची सर मोरो तमे जीविका नहीं करो अरे और फॉलो ही नहीं that is what 19(1)(g). ताकू रेस्ट्रिक्शन को इतले करे हो 19(2) दिस नोट 19(2) रीजनल रेस्ट्रिक्शन को इसे करे हो पब्लिक ऑर्डर प्लीज नोट पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी बुझिलो तो 19(1)(g) कोन कहूची you have freedom of trade and business
And please note on Article 21, right to life. And right to dietary habits. Please note on Article 21 goes right to freedom of dietary habit. તમે बीफ खाओ कि मुड़ा खाओ कि भेंडी खाओ कि कलरा खाओ काल किसी कोई बात नहीं बुझले कि सर मु कलरा खाउची अरे खा कलरा खाओ कि खाओ दैट इज अंडर आर्टिकल 21 बुझो तो कौन आर्टिकल अफेक्ट कला से को कलेक्टर 19 आओ आर्टिकल 21 से रेस्ट्रिक्शन कहां पर था पब्लिक ऑर्डर आओ हेल्थ एंड यदि बर्ड फ्लू होता था से कहते हैं बर्ड फ्लू हवा तब कर करेंगे बुझ पड़ सकता बुझ पड़ सकता तब जी कलेक्टर हम एमडी का ऑर्डर तब से तार महाजन को ताको तो सस्पेंड नहीं कर से बुझ पड़ सकता अरे किसी बुझलो कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कौन का तो कहना 25 कहला कम आओ हाँ देख आगे देखा जाओ इसके आगे आगे देखा जाए मुझे किसकी देखा जाए किसी अब काटी को तो पूछिए देखा है ना अरे नहीं 40 ईयर की देखा जाए उनकी फोटो का गूगल फोटो का नहीं देखा जाए फोटो नहीं देखा जाए उन पर आप खाली अपन फोटो का चेहरा देखने जाओ हां आगे देखा नेटवर्क स्लो होते
ଦେଖା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମଉସା ବଢିଆ ହେଇଛି ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ବଢିଆ ହେଇଛି ସେ ବର୍ଷ ଯେ ଲୋକ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ ମୁଁ ଟିଉସନରେ ଅଛି ମୁଁ ଟିଉସନରେ ଅଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମିସ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତୁମର ବଢିଆ ମେଲୋଡି ହଉଛି ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏକ ନମ୍ବର ମେଲୋଡି ବି ହଉଛି ନା ମେଲୋଡି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସୁପର ପୁରା ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ଦେଖିଲୁ ପଢୁଛି ବଢିଆ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅଛି ମେଲୋଡି ହଉଛି ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି